So, what are the earliest memories that you have with cinema? My earliest memory, I would say that there was a film called Hathi Mere Sathi, and I remember watching it 11 times. How old were you now? I must be 5 years old. I saw it 11 times. In that film, the elephant dies, and I used to cry so much when that elephant died. So I think that is my earliest memory. I remember. I think that. Where were you then? I was in Allahabad. Then. I think that is the first film I saw, and then I never stopped. And otherwise, what kind of movies were you brought up on? What were the biggest influences? All kinds. That's my entire family's was interested in films. So I remember, watching Guns of Navarone and Gunfight at the OK Corral and Magnificent Seven in theatre. I mean, Godfather. But even Hindi films. I mean, मुझे अगर मेरे पेरेंट्स पिक्चर नहीं लेके जाते थे तो मैं घर में बवाल कर देता था. And but I used to hate watching drama. I used to hate watching social films. जिसमें रोना गाना और बहुत गाने होते थे, वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं थे. When I was in Allahabad, the situation was pretty much the same. Film was the only entertainment. I mean, there were nothing else, and music. So at that time, Allahabad had great rock bands also. So I had a band of my own. We used to play and watch films and do all sorts of things any youngster would do at that The time. Rock Street Journal. Rock Street Journal, that guy Amit Sehgal who's the editor of Rock Street Journal was a member of my band. Acha. So and he pursued music. I mean, now he's the granddad of Indian rock. Yeah. So what was your relationship with the movies like? Like, I imagine it would be different from people who've been born and brought up in film families. So was it like a getaway thing, like an escape route? Was it like a dreamscape? What was it like? Earlier it was just an escape route. I used to like watching films. और बचपन से मतलब ये है कि फिर वो acting और वो मूंछ नकली लगा करके चाकू लेके all that I used to do. Right. Whatever जो भी दुर्गा पूजा बंगालीज बहुत है इलाहाबाद में, तो दुर्गा पूजा का भी एक कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है. मुझे लगता नहीं मतलब ठीक है दिल्ली में भी जैसे बहुत है, इलाहाबाद में बहुत है. तो जो दुर्गा पूजा होती है तो उसमें आई एम नॉन बंगाली बट उसमें पार्टिसिपेट करना तो वो चलता रहता, विच आई मिस सो मच टुडे इन बॉम्बे. तो वो हमेशा से था. तो नॉट पर्टिकुलरली फिल्म बट एनीथिंग विच इज स्लाइटली cultural and intellectually motivated to became both of that happened much later. But जहाँ पे मस्ती हो रही हो ना, I used to make sure I'm part of that scene. And cinema would fit into that thing? Cinema would fit in the early time. It was just for entertainment. Now then, when I started watching films like Ardhe Satya and Shyam Benegal's Ankur, suddenly I thought कि यार, and we used to. At what age did you start watching these films? I think Manthan I must be in class 10th, 9th or 10th. So then suddenly real people in cinema, real Nasir Bhai and Om Puri ji. So one real people. Amitabh Bachchan is the god है, इससे तो हम कभी बन ही नहीं सकते. But जब ऐसी फिल्में आई थोड़ी रियल तो लगा कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं, करना चाहिए ये. थोड़ा अटेनेबल लगा कि तब थोड़ा I got inclined toward. Then I started doing theatre, serious theatre. And did you watch Hollywood as well? Of course. मतलब वही तो मतलब बेस्ट ऑफ हॉलीवुड मैंने थिएटर में देखा है. What kind of movies? All kinds of stuff. मतलब हिंदी पिक्चर, मसाला पिक्चर, अच्छी हॉलीवुड मतलब फॉर हुम द बेल्स टोल्स भी मैंने देखी है. जैसे मैंने बोला गन्स फाइट एट द ओके कोरल, गन्स ऑफ नेवरॉन, फर्स्ट टाइम फ्रॉम नेवरॉन, गॉडफादर, पैपियन, सब मैंने पिक्चर हॉल में बाकायदा देखी फिल्म. तो सबका मिक्स है यार, हर तरह का. फिर जब यूनिवर्सिटी में आ गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वी हैड अ फिल्म क्लब. तो आर्काइव से पूना से वी यूज्ड टू गेट दिस 16 मिलीमीटर प्रिंट्स. तो यूनिवर्सिटी के तो और पहले से जब मैं 11th में जब थिएटर करने लगा तो मैंने फिल्म क्लब ज्वाइन कर लिया. यूनिवर्सिटी में ज़्यादा आज में कहाँ कौन से बैच के, तो मैं झूठ बोल देता था कि मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ. तो तब फिर मैं गोदार, ट्रूफो, फास्टबाइंडर सब देखना चाहिए. समझ में नहीं आती थी पिक्चर. This is at what age? When I was in 11th. अच्छा, okay.
पिक्चर गोदार थी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रही क्या हो रहा है, लेकिन ये लगता है कुछ इमेज, कुछ चीज़ें से मैं रिलेट करता था. फ्रेंच न्यू वेव का उस वक्त सेंस नहीं था क्या क्यों हुआ था फ्रेंच न्यू वेव और न्यू रियलिज्म जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप में आया, जिसकी वजह से विच अफेक्टेड आर्ट. मुझको हिस्ट्री का कोई उस पर्सपेक्टिव में मैं नहीं देख पा रहा था उस वक्त, बट फिर भी उस तरह के सिनेमा ने कुछ दिया, कुछ इमेज अच्छी लगती थी यार. अभी मैं आई रियली कैन नॉट पिन पॉइंट कि यार ये आई कुड अंडरस्टैंड दैट, आई कांट से दैट, बट समथिंग गुड आई कुड गैदर फ्रॉम दोस फिल्म्स. Right. But then you went to the NSD and you were trained intensively in theatre. So in terms of, do you think coming from that kind of background and that kind of an education, your engagement with cinema was slightly different from what it is with other directors now? I mean it in the sense of, I mean it in the sense of, whenever I speak to friends and people I know who've passed out or are still in the NSD, their engagement with cinema seems to be almost couched in a different kind of language, you know. So they'd say कि वो फिल्म बहुत सही है पर वो moment क्या पकड़ा है, you know, और वो वाला, so it's almost like it's an engagement with performance, with acting, whereas as film students one would have a completely different kind of negotiation. मतलब I can say that I am at a very advantageous position because I passed out from the national program, because I can understand performance and like you saying moment pakada. But because I've watched so many films और वो फिल्म कल्चर से रहा तो इमेज को लेकर भी एक सेंस था. और मेरा NSD में जाने का ये नहीं कि मुझे थिएटर करना है, तो मुझे इलाहाबाद से किसी भी ऐसी जगह पे जाना चाहता था जहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो रही हो. तो NSD wasn't about love for theatre? No. मैंने I passed out from NSD. I was the youngest in my class in 1989. And this is 2011. I don't think I've watched more than 2 plays in these past years. मैं play देखता ही नहीं हूँ. So Abhi, now that you've been in filmmaking for so many years, do you still watch films, and like what are your watching habits like? Yeah, in a week at least I watch 3 to 4 films in a week. I take time out to watch films. The kind of films I don't watch, I don't like dark films. I don't like films which deal with child molestation and incest and stuff like that. I don't think it's good enough to make a movie on, you know. Right. But are you somebody who otherwise gets emotionally affected by what you watch? I do, of course. I cry. Even now, even since you've been in the making part of it? That is the greatness of a film. After what was the becoming last film that you really got emotionally affected by? 3 Idiots. Yeah? Describe that in what way? Friendship, bonding. The scene when the friend is when they take him to the hospital and he's paralyzed. All the scene with friends. I like buddy films. I like this whole concept of friendship a lot. I loved Raju Rani. All his films I like. For you, what is the most painful part of filmmaking? Which part do you dislike? Editing. Why? I don't like it. Why is that? See, as a director, because I write my own films, picture ही मैंने बनाई, मैं चाहता हूँ बोला और it should happen. But still it takes time. So most of the time when I'm editing, if the edit takes month and a half or 2 months, I finish at least 2 to 3 books during that time. Oh, okay. And which is the part of filmmaking that you enjoy the most, that drives you the most? Shooting and doing background music. Background music? How is that? Like when you're done with your shooting and everything is, you know, edited and the entire film is there, you still have a chance to, you know, infuse that little bit of emotion which you thought you have not done. Background music, sir. Background music. You still get that another extra element to add in the film, which creates emotion, which gives a new perspective, which links characters and events. So, give me an example of a film whose background score you really enjoyed. Godfather, The Good, the Bad, and the Ugly. And then recent film, if you've seen a film called Perfume. Yeah.
course. Super background score. Yeah. Very good background score. And in Hindi films? शोले, Hmm. सत्ते पे सत्ता, कंपनी. Okay, I want to ask you a couple of questions about Hasil. No, before that, how difficult was it to get financing for a film with that subject? हासिल. For Hasil. At that time, Hindi cinema was going to a, I mean, not through a very, transitory phase. It was about to. Those kind of film, the kind of film Hasil was, and then later on the kind of films which came out, those were the teething years of Hindi cinema, with the different but yet commercial. I won't say art film or the parallel cinema. Parallel cinema happened much before. Right. But the balance of, good aesthetics, but still commercial. At that time, when I made Hasil, all these love stories with Hrithik Roshan were happening, and they were Doing well. not doing well. Achha. Most of his films flopped. But So this is the आप मुझे अच्छे लगने लगे. मतलब पहली फिल्म ऋतिक के बाद वाली पिक्चर हुई थी, तो All of वो them टाइम था. tanked, yeah. हाँ. So मैं उसके बाद I used to write before I had written for Mr. Mani Ratnam. So producers used to tell me, I used to take the script to them, and I want to make this film, and it's a love story with action and with a volatile political student politics set in the north. And they all used to tell me, you come and you write a script for us. By the time then we'll interact, and then your film will also happen. But मेरा हो गया था enough. अब नहीं करूँगा मैं. So Hasil, I think I must have taken that script to every possible producer in town. और reactions किस तरह के थे? अच्छी लगती थी, सब करते थे, करेंगे, बट सबको था कि शायद हम ये पिक्चर देख लेंगे, बनेगी तो देखेंगे, बनाएंगे नहीं. तो बॉबी बेदी एक है, आपके दिल्ली के ही हैं प्रोड्यूसर, जिनके साथ मैं काम कर चुका था पहले, बैंडेड क्वीन वाले. आई यूज्ड टू असिस्ट प्रदीप किशन, अरुण रॉय एंड इलेक्ट्रिक मून. तो बॉबी वाज द प्रोड्यूसर. I had shared a very nice, healthy, professional relationship with Bobby, and he said that I'll produce your film. I said, fantastic. Yeah. But there was a catch. And उसने एक टेलीविजन सीरियल स्टार से पास करवा लिया. And said, you come to Delhi, ये long distance हो नहीं पाएगा. You come to Delhi and you make this serial, and then we'll do your pre-production as well. मैंने कहा ठीक है. अब उसकी गलती है कि नहीं, मतलब सीरियल बन रहा था, बट वो टाइम सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे शूटिंग कर रहे थे. अब मैंने क्या किया था कि हासिल के स्क्रिप्ट में क्लाइमैक्स लिख दिया था कि कुंभ मेले में 122 साल वाला कुंभ मेला जो इलाहाबाद में आया था, उसका मैं क्लाइमैक्स यहीं करूँगा. वो कुंभ मेला आ गया और जा रहा है. कुछ दिन बाकी हैं और ये कुछ हो ही नहीं रहा है. सो आई गॉट बैक एंड द हेल्प ऑफ वेरी वेरी dear friends who put in their own money. You shot sections of the film? I shot the climax and the big shots. Oh, okay. This is where the guys get shot. Yeah, the entire climax of Hasil, all the big shots with the crowd and Irfan running and Jimmy and Rashida running through the crowd and action, all that. वो तो मैंने कुछ शूट कर लिया. फिर आया मैं एविड और FCP के मैंने तब तो मीडिया 100 होता था. एविड आया भी नहीं था तब. उसके भी पैसे नहीं थे, और मैंने स्टीम बैग पे एडिट करके 4 मिनट का फुटेज काटा पिक्चर का. अच्छा. And I started showing it to people. Then Mr. Vijay Jindal, he saw it and he liked it. He said, okay, I'll produce it. That's how Hasil happened. No, but one thing that you said in the past about Hasil, in an interview in 2003, you said that that one of the reasons that you made Hasil was that what was really bothering you was that the youth weren't interested in politics at all. For them, it had become a dirty word. But then subsequently, you said that for you, it wasn't really an overtly political film, but a action film with the backdrop of student politics. So how do you understand the term political cinema? But I mean it more in the sense of how a film that espousedly works towards saying something political, something which is overtly political, like it's part of its primary agenda. See, in Hasil, the film ends with my hero saying कि politicians अब तक parliament में कर रहे थे गड़बड़. Now they've entered up houses. They're interfering in our personal lives. Right. So the guy who's a politician, what will you do now? I'll go out and kill another guy. I'm going to kill him. क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ अपने गुस्से के अलावा और कुछ नहीं हमारे पास.
वो थी पिक्चर, एक यूथ का एंग्स थोड़ा वो हासिल को मैं बोलूँगा इट्स प्राइमरीली इट्स अ लव स्टोरी सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स। मैं बहुत पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाह रहा था जब हासिल बना रहा था। मैं एक लव स्टोरी कहना चाह रहा था, और ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो में जिससे मैं वाकिफ़ हूँ, जिससे मैंने जो मेरे फर्स्ट हैंड है, मेरे जिसको जो मैंने देखा है, बस। Okay, so I'll ask you a quick series of questions here. Which film do you remember for its images? Solaris. Which film do you remember for its music? Godfather. Which film do you remember for its sound? Saturday Night Fever. Which film do you remember for its editing? The Exorcist. Which film do you remember for the cinematography? Godfather. Godfather. Tell me about a film that everybody seems to hate for some reason, but you seem to like. Samaria. Okay, we'll leave it at that. One of the catchwords that usually does the rounds with filmmakers is that they really seem to have this vision of this complex called the masses or the audience. When you're writing a film, how do you negotiate with this thing? How do you negotiate with who's going to watch? See, now I know the kind. If I'm dealing with such a subject, the subject will decide the budget. And if the budget is high, it has to be catered to a larger audience. So when filmmakers say कि फिल्में ऐसी बन रही हैं क्योंकि audience को ये चाहिए, masses यही मांग रही हैं, what do you subscribe to that kind of a notion? प्रॉब्लम वही है ना, प्रॉब्लम ये इट्स नॉट अ न्यू थिंग व्हाट यू आर सेइंग, बट जब पहले मदर इंडिया भी तो मासी पिक्चर थी, शोले भी तो मासी पिक्चर थी, पर आज भी शोले जैसा डायलॉग को लिख के दिखा दे, उस तरह के कैमरा एंगल्स करके दिखा दे, वो जो नाइस मोमेंट बिटवीन अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, लाइट ऐसे बंद करिए, माउथ सॉन्ग वगैरह, इट्स क्या इमोशन वो करता है, वो भी कमर्शियल है ना, लेकिन एस्थेटिकली कितना करेक्ट है यार। महबूब साहब को ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन मदर इंडिया जैसी पिक्चर बनी नहीं सकती, गंगा जमनी जैसी पिक्चर बनी नहीं सकती। हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये होगी, बिकॉज साउथ इंडियंस हैव नॉट फॉरगॉटन दिस, राइट, बिकॉज दे स्टिल मेक रूटेड फिल्म्स। तो उनका हीरो अभी भी लुंगी पहनेगा, राइट, अपना भी खाना भी वही खाएगा, राइट। हमारी हिंदी फिल्मों को अता पता नहीं होता। ओबरॉय साहब है, कौन है भाई साहब ये ओबरॉय साहब? हेलीकॉप्टर से आएंगे ओबरॉय साहब, कौन है ये ओबरॉय साहब? सडनली ऑडियंस रिलेटिव नहीं कर पाती उनसे, ओवरसीज मार्केट को आप केटर कर रहे हो, इसलिए सिनेमा खराब हो गया है। राइट, राइट। ऑल्सो यू हैड अ प्रीटी लॉन्ग स्टिंट इन television. And I read in one of the interviews something that you'd said, and you'd said then that तब हम television पे बहुत प्यार से काम किया करते थे. What do you think has changed in television? I remember because मैंने जब लास्ट वो राजधानी बॉबी बेदी के साथ सीरियल बनाया था, वो लास्ट था जब उसके बाद ये सास भी कभी बहू और इस तरह के टेलीविज़न वो करोड़पति शुरू हुआ. Right. टेलीविज़न सडनली ये सोप 5 episodes in a week वो आ गया. पहले एक एपिसोड आता था, थोड़ा प्यार से बनता था, पैसे कम रहते थे लेकिन अच्छा लगता था, कहानी पे ज़्यादा जोर दिया जाता था. ये सब नंबर्स का खेल है यहाँ पे, इन द सेंस वही टीआरपी का चक्कर कि इसीलिए सी व्हाट हैपेंस इन व्हाट आई नो, आई एम नॉट डूइंग टेलीविजन नाउ, बट व्हाटएवर आई नो अबाउट टीवी थ्रू फ्रेंड्स कि स्क्रिप्ट होती नहीं है. आज शूट किया जा रहा है, अभी स्क्रिप्ट आएगी, बिकॉज लास्ट वीक का जो टीआरपी है उसने क्या इंडिकेट किया है उसके हिसाब से स्क्रिप्ट बदली जाएगी. आज डिप किया है तो उनको पता चला इस रीजन डिप बिकॉज कि वो सास और बहू में प्रॉब्ली ड्रामा कम था, तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में और ड्रामा डालो. तो एवरी डे द स्टोरी इज चेंजिंग. डायरेक्टर राइटर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. एंड वी वर डूइंग टीवी चैनल वाले को मालूम था किस हिमांशु धूलिया, अनुराग कश्यप या इम्तियाज बना रहा है, तो छूट थी, हम वो रिस्पेक्ट थी हमारे लिए. तुम्हारी जान जाने वाली थी आज, हमने रोक लिया, हमने कहा रुको कुछ दिन के बाद जाना, धन्यवाद दो हमारा.